उपस्थित सभी महानुभाव, अभी 2 घंटे पहले G20 समिट का समापन हुआ और अब मेरा विधिवत ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका प्रारंभ पूज्य बापू के स्टैच्यू के अनावरण के साथ उनको नमन कर करके हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। The Governor of Queensland, the Mayor of Brisbane and distinguished guests. Just 2 hours ago, I had witnessed the ceremony, the closing ceremony of the G20 summit. And now, as per our schedule, the bilateral visit to Australia has begun, and how it has begun with the unveiling of the statue of Bapu Mahatma Gandhi. And this is beginning with our heads bowed in respect. मैं इसके जो ट्रेडिशनल ओनर है इस धरती के, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। I'm indeed very fortunate that we begin with this unveiling of the statue, and I also bow to this honor, to this land, and indeed I'm grateful for this. मैं मेयर श्री का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम के लिए उन्होंने हमें सहयोग दिया और हर भारतीय की भावना का आदर किया। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। I'm also grateful to the Mayor of Brisbane for giving full cooperation to this project and having respected the feelings of the Indian community. इन दिनों भारत में मेरे विषय को लेकर के एक चर्चा चलती है और मैं भी कभी कभी सुन करके बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं तब भी यहाँ के लोगों के साथ मैं गांधी की बात करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये समर्पण है, ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा का भाव की अभिव्यक्ति है। Nowadays in India, there is often discussion that after having, and which amazes me very often, is that after having become Prime Minister, I seem to be talking constantly about Gandhiji. But today, after Mr. Hemant Naik spoke about the entire sequence of events, I hope those people have received their answer. That even when I was not the Chief Minister of Gujarat, I always believed in the principles of Gandhiji, and I always talked about his principles and his philosophies. It's my commitment to Gandhiji and my full respect and my dedication to him. हमारा शर्मा जी का परिवार यहाँ बैठा है। वो समय जो मुझे मेरी खातिरदारी करते थे जब मैं यहाँ आया, पुराने लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफी परिचित चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद आज मेरा आप सबके बीच आना हुआ है, लेकिन एक अच्छे अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। I can see the Sharma family sitting here. These were the people who used to host me when I used to come in the past. I see many old friends here, known faces. And today I'm indeed very happy that they are all present. It is indeed a very good occasion. 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ था। On the 2nd of October was born at Porbandar not a human being but an entire generation and an entire age. और मैं मानता हूं
कि महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट हैं जितने कि वो अपने जीवन काल में थे। I firmly believe that Mahatma Gandhi is for the world today as relevant as he was during his lifetime. आज विश्व दो बड़े संकटों से गुजर रहा है और पूरे विश्व को उसकी चिंता है, चर्चा है। हमारी G20 समिट में भी उन दोनों बातों की चर्चा में काफी समय भी गया है और वो दो बातों का जवाब महात्मा गांधी के जीवन में से मिलता है। Today the world is confronted by two main issues, two main concerns, and there were many concerns and discussions during the G20 summit also, which took up a lot of our times. And I feel for both situations and concerns and issues, we can get inspiration from Mahatma Gandhi's life. महात्मा गांधी के जीवन की बातों को अगर हम देखेंगे तो आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका जवाब ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। If we look at the life of Mahatma Gandhi and we look at his teachings, then all the problems that the world faces today, we can get from his life and his teachings. आज दुनिया को एक चिंता है ग्लोबल वार्मिंग की और दुनिया को दूसरी चिंता है टेररिज्म की, आतंकवाद की। Today the world is concerned about global warming and about terrorism and extremism. ग्लोबल वार्मिंग के मूल में मनुष्य की जो प्रकृति का शोषण करने का स्वभाव रहा, सदियों से हमने प्रकृति का शोषण किया, प्रकृति का विनाश किया और उसी ने आज ग्लोबल वार्मिंग का हमारे लिए संकट पैदा किया है। At the heart of global warming is the philosophy of exploitation. For centuries we have plundered Mother Nature and we have destroyed it. महात्मा गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, उसका वो विरोध करते थे। मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर का ही अधिकार है, उससे ज्यादा प्रकृति से लेने का अधिकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जीवन में जी करके दिखाई थी। Mahatma Gandhi used to get inspiration and he used to love nature. Even during his lifetime, he was absolutely against the exploitation of nature. He believed in milking nature only to that extent. Only to that extent we have the right. And he said this throughout his life and lived it, and we can see it from his life. अगर हमने प्रकृति का शोषण न किया होता, मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अगर मिल्किंग ऑफ द नेचर किया होता, तो आज पूरे विश्व को जिस प्रकार की समस्याओं का संकट से झेलना रहा है, शायद हमें जूझना न पड़ता होता। If we hadn't exploited Mother Nature the way we have done, and we had only milked it to the extent that Mahatma Gandhi had preached, then we would not be faced with these problems today. महात्मा गांधी जब 25 के कालखंड में, 20-25 के कालखंड में 1925 और 2030 के बीच में साबरमती आश्रम में रहते थे। 1930 में दांडी यात्रा के लिए वो चल पड़े थे। उसके बाद कभी वापस साबरमती आश्रम नहीं आए थे और साबरमती नदी के किनारे पर रहते थे। उस समय साबरमती नदी लबालब पानी से भरी हुई रहती थी। 1920-25 के कालखंड में पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय भी अगर गांधी को पानी कोई देता था और ज्यादा पानी देता था तो गांधी उसको डांटते थे कि पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, पानी आधा गिलास दो, जरूरत पड़ी को दूसरी बार मांगेगा। गांधी इतने आग्रही रहते थे, अपने पास आए हुए लिफाफे के पीछे वो लिखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं ज्यादा कागज उपयोग करूंगा तो ज्यादा वृक्ष कटेंगे और तब जाकर के कागज बनेगा, और वो भी मैं नहीं करूंगा। यहां तक उनका आग्रह रहता था। If we look back at the decade of 1920 to 1930, when Mahatma Gandhi used to live on the banks of the Sabarmati River at his ashram, and then of course in 1930 he started off on the Dandi March and never came back.
At that time, the Sabarmati river was full. There was no shortage of water. But even then, if anyone gave too much water, more than what was required to Gandhiji, he would scold them. He would say, half a glass of water is quite enough. He would write on the back of envelopes to save paper, because he was quite conscious that more paper we used, more trees would be cut down, and he believed in preservation of nature. हम कल्पना कर सकते हैं गांधी के जीवन की हर बात में कि वो प्रकृति की रक्षा के संबंध में कितने सजाग थे और अपने जीवन आचरण के माध्यम से प्रकृति की रक्षा का संदेश कितना देते थे। और वही जीवन अगर हम जीते या आज भी उस जीवन को हम स्वीकार करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो दुनिया की चिंता है उस दुनिया को बचाने में हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। If we look at his teachings and if we imagine a world where we abided by the principles of Gandhiji and we loved nature, then and we followed the way he lived his life, then all the problems of global warming would not have happened. And if we also even today go by his teachings, then maybe we can do something and contribute in a way to save Mother Earth and the world. महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया। यह अहिंसा का शस्त्र ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साधन था, ऐसा नहीं था। अहिंसा यह आर्टिकल ऑफ फेथ था। महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि हम शब्द से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते, शस्त्र से हिंसा की तो बात बहुत दूर की है। Mahatma Gandhi showed us the path of non-violence. Non-violence was a weapon not just against the British, but also for him it was an article of faith. Mahatma Gandhi believed not only in our acts, but also in words we should be non-violent. और अगर आज विश्व ने गांधी के उस अहिंसा के संदेश को पचाया होता, समझने की कोशिश की होती, तो होलियर देन दाओ, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरा रास्ता ही सही है, इस प्रकार के जो विवादों के अंदर दुनिया फंसी हुई है और जिसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए शस्त्र का सहारा लिया जा रहा है और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, महात्मा गांधी का संदेश उस रास्ते से हमें भटकने से बचा सकता था। If today the world had indeed internalized what Mahatma Gandhi had said and not gone about with their attitude of holier than thou, using more and more force and always saying that I am right, then I think we could have solved many of the problems and not had these problems. Today there are entities who are using weapons, more and more weapons, and innocent lives are being lost. All this could have been avoided and we could have saved the world from its problems. आज भी विश्व के लिए सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति समानता का भाव, यही हमें विश्व को से बचने का रास्ता हो सकता है। कोई किसी से बड़ा है और इसलिए मैं उसको चुनौती दूं, उसको खत्म करूं, ये रास्ता विश्व को मंजूर नहीं है। जगत बदल चुका है और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उस सपने की ताकत कितनी है वो आज दुनिया को समझने आना शुरू हुआ है। Even today, if we love everyone and have a feeling of equality towards everyone, then that is the only way forward. We shouldn't be getting someone down or cutting him down to size only because he's big. In fact, all the problems of the world would end if we followed in spirit and in principle Mahatma Gandhi's teachings and really had understood what he stood for. मैं विशेष रूप से उन परिवारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब मैं आया ऐसी बातें की और उस पर वो लगे रहे। हेमंत और उनके सारे दोस्त, मैं पूछ रहा था हेमंत तुम्हारे बाल कहाँ चले गए, तो कल्पना ने मुझे कहा कि मैं तो उसको ठीक खिला रही हूँ, आपके दोस्त को मैं खिला रही हूँ, अब चिंता मत कीजिए। ऐसा एक पारिवारिक वातावरण, इसी पुराने साथियों, बातों बातों में मन से जो बात निकली, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ये काम तो करेंगे ही, लेकिन वो सौभाग्य मेरे नसीब में होगा। शायद कोई ईश्वरीय संकेत है कि इस काम के लिए मुझे अवसर मिला।
I'm especially grateful to the families who hosted me during those years, and they continued to work on what I had suggested. When I told Hemant Bhai earlier today that where all your hair is gone, his wife said, well, I've been feeding him very well. And this kind of very convivial and an atmosphere of familiar relations, I'm indeed very grateful, and I never thought that they would be able to carry to fruition this work. I'm indeed very fortunate, and I think this is a message from God that I'm present here on this occasion today. जो लोग बाहर हैं, यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं, उनका भी मैं सम्मान पूर्वक आदर करता हूं और उनका गौरव करता हूं। आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगले कार्यक्रम के लिए हमारे लोग मुझे घड़ी दिखा रहे हैं दूर से, तो मुझे यहाँ पूरा करना होगा। फिर एक बार मैं सबका अभिनंदन करता हूँ एक महान काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूज्य बापू को हम सब प्रणाम करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर के मानव जाति के कल्याण के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने का हम प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Those standing outside, to you also my respects. Striking a personal chord with some of those he had stayed over when he wasn't the Prime Minister in his early days in politics, when he was a mere political worker. But clearly a lot of enthusiasm in Brisbane. Of course, he moves on to Sydney later on. We have with us Ambassador Rajiv Dogra and Paranjoy Guha Khurta on standby. Paranjoy, if I can come to you, how do you see the Prime Minister's second leg from here on now? First, it was all about the G20 summit, talking about big issues, but now it's about what the Indian community in Australia is expecting from the Prime Minister. They're talking about coming back to India. They're talking about more job creations, a better economy. This is indeed Mr. Narendra Modi's constituency. I dare say his popularity among non-resident Indians is even more than his popularity within his country. You know, after all, Mr. Modi and the Bharatiya Janata Party got 31% of the vote, and they came to power, swept to power. They have 282 members of parliament. Right. But the non-resident Indian, whether she or he be in the United States of America or in Australia, are not just enthusiastic, they are wildly euphoric about Mr. Modi and his ability to change India. Now, there is here inherent a danger that he's raised expectations to very unrealistically high levels. You know, I was listening to what the people that Rahul was speaking to, and some of them are indeed very, very enthusiastic. They want to come back to India, they want to contribute to India. But at the end of the day, that means that the Indian economy has to revive. That means jobs have to be created, and these are the biggest challenges before Mr. Modi. You know, he's been extremely lucky that international oil prices have been down, inflation rates have muted, but creating jobs, you know, it's not enough to say make in India. To actually ensure that new industries come up, new jobs are created, that the youth are given jobs is a huge challenge. And that's a valid few point. Comments about and I want to make a few comments about what he said, you know, about Mahatma Gandhi, about environment. You know, he in terms of atmospherics, in terms of making the right noises, he's got it right there. He's a brilliant orator. He knows how to engage with the audience. He knows exactly how to engage. So, you know, he personalized it. He mentions one Hemant, and you know, that's his way of communicating. But I want to make a different point here. You know, this issue of environment and sustainable, ecologically sustainable development, it's a huge issue at home. And at home, Mr. Modi's government has a long way to go. You know, whether it be the enforcement of the Forest Rights Act, and let me say, there are some business persons who are with Mr. Modi, like Mr. Gautam Adani. Mr. Gautam Adani is building one of Australia's biggest coal mine projects. He's building a railroad over there, and these are projects which have, you know, raised the attention of Paranjoy, now activists, you've made a very important point over here, and India did raise this issue, talking about renewable energy as well at the G20. But Ambassador Dogra, as Paranjoy put it, now Narendra Modi is just swept to power. It's just been, what, 6 months right now. The expectations, do you think they're really unrealistic at this point in time? Unrealistic expectations is what you believe as well, or would you differ on that?
No, I don't think Pranjoy said unrealistic expectations. What he probably said, if I read him right, is that let's take a step forward, pause, think, and then take the next step. And I think that's it. That's a realistic way of moving forward. And I don't think Mr. Modi wants to act like an avalanche. What he is doing is to successfully changing the mindset of the people back home that yes, we can do it. He wants to do it faster than fast. Whether the rest of the nation is prepared to do it at that faster pace, that remains to be seen. And I think there's a reality check of sorts by a statement which has come today in one of the newspapers from Singapore, one of the ministers. He said that yes, Singapore is ready to make Delhi a smart city, but the Indian government and Indian people have to think of the social causes of it and social effects of it. Right. But supposing slums or certain areas in Delhi are changed overnight, what happens to those people? Will there be a social protest? So these are the things which Pranjoy was hinting at when he also brought in the climate change issue. Ambassador and the Dogra, just hold on to your environmentalists, thoughts for a brief moment.